So, Today we're going to start off with our summation. जिसमें we're going to do how summation is performed, what is the sigma notation, how we're going to write formulas in terms of n, and how the methods of differences are applied to our summation series. Have you done summation in your IGCSE जिसमें आप arithmetic and geometric progressions करते हो? नहीं? Alright, acha. So giving you a quick recap of what you might have done before, not to update हो. There's this series that is called अब series or sequences हमारे पास क्या होते हैं कि for example when you've got these numbers, these random numbers, इनमें आपस में क्या difference आ रहा है हमारे पास कि every number is being 2 is added to every number to get the next one, right? तो इसमें हमारे पास सीरीज में ये आ गया कि we have a common difference of 2 of +2. अब इसी तरह हमारे पास एक सीरीज होता है जिसको हम कहते हैं arithmetic progression. Now, why is it called arithmetic progression and what is an arithmetic progression? Arithmetic progression में हम लोग एक common difference का एक formula बना लेते हैं, that is an is equals to a plus d n minus 1. अब इसमें जो a n होता है वो हमारी कोई भी term होती है जो हमने find out करनी होती है. a is our first term, d is our difference, and n हमारे पास वो वाला number होता है, number of term होता है जो हम लोग find out कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है दैट वुड बी a5, तो हम यहाँ पे n की जगह जो है वो 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे. ऑलराइट, नाउ दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर अरिथमेटिक सीरीज और एनीथिंग लाइक दैट. इसी तरह हम लोग अरिथमेटिक सीरीज में एक और चीज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड द सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज. मतलब एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम सम कैसे करेंगे इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका फॉर्मूला होता है. That is called Sn is equals to 1 by 2n 2a plus d n minus 1. इसमें हमारे पास फिर से वही चीज़ आ जाती है कि n is the number of term. We have a as our first number and we have d as our common difference. Alright, these are the formulas that you should know since questions में कहीं आ सकते हैं, but it's important because they're more a part of your A-level maths or your O-level maths. And then you've got another summation का ही formula जो arithmetic progression का ही होता है, that is called that is like 1 by 2 n a plus l. इसमें n हमारे पास सेम रहते हैं, a हमारे पास सेम रहते हैं, and your l is your last. These are two of the formulas for your arithmetic progression sum. Alright, अब ये हमारे पास आ गया arithmetic progression. Now another progression that we should know before we start this chapter is your geometric progression. Geometric progression may we have our term formula as an is equals to ar n minus 1. इसमें सेम चीज़ है कि हमारे पास a is our first term, our n, specifically our n is the number of term जो भी हमने find out करनी है, and your r here is your ratio. और ये रेशियो हमारे पास होता है कि हमारे पास जो फॉर एग्जांपल टर्म्स हैं a1, a2, a3, a4, विच इज़ योर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. जो हमारे पास लीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय द टर्म बिफोर इट से रेशियो आता है दैट इज कॉल्ड योर आर, विच मीन्स योर आर इज a2 over a1. इससे हमारे पास आर निकलता है. और योर आर कैन ऑल्सो बी a3 over a2 और a4 over a3. सही है, इन सब से हमारे पास r निकल आता है विच इज़ आर कॉमन रेशियो. ये हमारे पास आ गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इसका टर्म फार्मूला. अब जैसे अरिथमेटिक में हमने देखा था, इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी वी गॉट अ सम फार्मूला जो फॉर अ फाइनाइट सीरीज इज Sn is equals to a
Rn minus 1 divided by R minus 1. इसमें भी same चीज़ है. This is the first term, this is the common ratio, and your n is your number of term. Alright, so this is the formula for a finite series. In finite series के हमारे पास formula different होता है. That is, I think S infinity is 1 minus R n over R, something like that. It is probably this. But this is not what is included in your syllabus. आपने रहना till your finite terms. Alright. This was the the basic knowledge that is required for your summation of series in your A-levels for the maths. Coming towards our topic, what is included in our syllabus is the summation formulas that are already given in your formula book. You just have to know how to apply them. And secondly, your sigma notation, which is simply the notation that we use to write our summation formulas. And then we have to write in terms of n, which is our formula that is applied in terms of n, जिसको हम in the term सिर्फ n की terms में लिखते हैं, which is n is the number of term that we already know. All right. Now, in this chapter, you've got 4 main formulas that are going to be used in your questions. Now, I'll just write them all. Your first one being summation of 1. Okay? This sign, which is this, this is the sign just for the summation. इसको हम summation का sign कहते हैं, जिससे हम लोग simply show करते हैं कि this is being summed. मतलब for example, हम 1 plus 2 plus 3 plus 4 कर रहे हैं, तो this इस पूरे को एक notation में लिखने के लिए we use this specific symbol, right? Now this is the first formula. Then you've got another formula that is R is equals to 1. R is equals to 1 by 2 n plus 1. This is another formula. The third formula goes like summation of n, R is equals to 1, R square is equals to 1 by 6n, n plus 1, 2n plus 1. And then the fourth formula is n, R is equals to 1, R cube is equals to 1 by 4 n square n plus 1 whole square. Now these are the 4 formulas that are going to be used in your questions, and they're already given in your formula sheets, so you don't have to really learn them. Second, third or fourth formula sheet में given होते हैं, and this first one is not really applied, but even if it's applied, it's a very simple formula. So just learn the first one, and the other 3 will be given in your formula sheet. Achha. Now how you're going to apply these formulas is, I'll show you how to expand these formulas so that you know कि आपने इसको जब apply करना है तो what do they really mean. अब अगर हमारे पास जो first formula है, that is, sorry, R is equals to 1 and it had a 1 over here, right? यहाँ पे जो n है, इसको हम लोग suppose करते हैं किसी भी number के equal. मतलब हमारे question में n would be given 4, तो we'll have to take it 4. अब फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं यहाँ पे n जो है वो हमारे पास 3 है. अगर n हमारे पास 3 है तो हमारा summation का formula for this specific formula would be, since we're just summing ones, we'll sum 1 3 times. ठीक है, मतलब कि 1 plus 1 plus 1 which is 3. This is just simply how you're going to do it. और इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी नंबर होता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास यहाँ होता है 5, so we're only going to sum 1 5 times, which means 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, which gives us 5. इस formula में और कोई detail नहीं है, कोई complication नहीं है. You just have to add 1 the number of times आपका n है, ठीक है. 100 होगा तो you'll add 100 times, which will give you 100 in answer. सही है. अब now this was the first one. Going towards the second one, what we get is the formula is R is equals to 1 and R. All right. अब यहाँ पे जो हमारे पास n आता है उसको भी हम लोग कुछ भी रख सकते हैं. यहाँ पे n अगर हम लोग रख लेंगे 3, it means कि हम लोगों ने R को till 3 लेके जाना है, which means कि हमारे पास जो R होगा, that जो summation होगी, that would be 1 plus 2 plus 3.
which gives us 3 plus 2 5, 5 plus 1 6. अब इसी तरह अगर हमारे पास एक बेसिक फार्मूला बना लें हम इसमें से, तो दैट बिकम्स n r इज इक्वल्स टू 1 r. अब ये किसके इक्वल होगा? क्योंकि हाँ r हमने n तक जाना है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स विच वी डोंट नो कि n क्या है. So we start with 1 2 3 4 5 and so on till we reach n. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब तक n तक नहीं पहुँच जाते we don't stop on this formula. This is simply how you're going to expand this formula. And जो आपका ये second वाला formula है, this one, it is also related to your arithmetic progression का summation का formula. Now how is that related to this is, for example जो हमारा formula है, that is n is equals to r1 plus r, right? अब we know that it is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 till rn. ठीक है, ये n पे जाके स्टॉप होगा. अब अरिथमेटिक सीरीज में क्या होता है, हमारे पास a होती है हमारी फर्स्ट टर्म, हमारे पास d आता है हमारा कॉमन डिफरेंस, we have n as number of terms, and then we have our l as last term, right? ये चीज़ें हम लोगों ने पहले देखी है कि हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज में ये कैसे आती है. Now the formula of the arithmetic series was for the sum 1 by 2n a plus l, right? अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो a है that is always going to be 1. So since हमारा a 1 है, we'll write it as 1. अब जो last term है that is supposedly going to be n, क्योंकि हमने n तक जाना है in our summation formula. So the formula that we come up with is equal to the formula that we studied earlier कि हमारे पास जो formula होता है for our n is equals to r, n r is equals to 1 r, which is 1 by 2 n n plus 1. ठीक है, 1 plus n हो या n plus 1 हो, that's the same thing. तो हमारे पास इस तरह जो है ये वाला formula reach होता है, that is simply the formula for the summation of our arithmetic series. अब this is how you're going to expand them. अब questions में हमारे पास ये किस तरीके से आएगा and how we're going to use them in our exam type questions is, we'll solve a question together. Now अगर आपके पास question आ जाता है कि you have to find the sum of n r is equals to 1 4r square plus 1. Now this is one of the formulas that we don't know. We don't know how to solve them. We don't know how to apply any expansion to it. We don't know anything how to do it. Plus हमारे पास n भी नहीं given, which means कि हमारे पास जो answer होना चाहिए it should be in the terms of n, क्योंकि we don't know कि हमारे पास n 5 है 4 है 3 है क्या है. So what we are going to first do is we're going to simplify our formula in such a way कि हम लोग अपने उन formulas को reach कर सकें जो हमारे पास formula booklet में already given है. So हम लोग 4r square और 1, since they're just two separate independent terms, we can just separate them by applying our two separate term formula. मतलब जो हम basic maths में करते आए हैं कि if you have for example 2 1 plus 3, तो हम लोग इस 2 को इसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और इस 2 को इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो इसी तरह हम लोग समेशन को दो तरह अप्लाई कर देंगे, दोनों पे इंडिपेंडेंटली. सो फर्स्ट हमारे पास बन जाता है n r इज इक्वल्स टू 1 4r स्क्वायर प्लस दूसरा बन जाता है n r इज इक्वल्स टू 1 1. ऑलराइट, अभी हमने अलग अलग एक्सपैंड कर दिए एंड वी नो कि हमारे पास जो ये है दिस इज ऑलरेडी गिवन इन आवर फॉर्मूला शीट और वी नो हाउ टू सॉल्व दिस, राइट? अब दूसरा जो हमारे पास है इसमें हमारे पास एक 4 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि हमें नहीं पता हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट. सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज वी आर सिंपली गोइंग टू टेक इट कॉमन. अब इसको अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 4 समेशन ऑफ r स्क्वायर प्लस n r is equals to 1 and 1. अब जो हमारे पास दो समेशन के टर्म्स रहेंगी, they are both the ones that we know that are given in the formula sheet.
So we'll just apply the right hand side of these equations to our uh, this equation, right? तो ये हमारे पास आ गया 4. अब ये हमारे पास फॉर्मूला शीट में गिवन है, that is 1/6n n plus 1 2n plus 1 एंड देन इसका हमारे पास पूरा जो फॉर्मूला गिवन होता है, क्योंकि वी टू हमने क्या कहा था कि हम लोग 1 को उतनी दफ़ा ऐड करेंगे जितनी दफ़ा हमारे पास अपना n होगा. सिंस यहाँ पे n हमारे पास n है, तो विल जस्ट सिंपली राइट इट एज n. Now what we're going to do is we're going to simply simplify it, जैसे हम लोग एक algebraic equation को simplify करते हैं. So we multiply our brackets, so we get 3/2n multiplied with n plus 1 2n plus 1 plus n. Then you take your 1/3n common and you multiply your 2n side, n plus 1 2n plus 1 plus 3. And then you simply end up with 1/3n 4n square plus 6n plus 2 plus 3. And in the next step you get 1/3n 4n square plus 6n plus 5. So this is how you simplify this specific summation series into a simple algebraic equation in terms of n.